Hey, hi Swani. Good evening, sir. Good evening. How are you? I'm fine, sir. How about you? I'm also good. So I was going through your CV. You did your article from S. Loy and Associates, right? Yeah. Can you brief me overall about yourself, your work experience, and CA journey and all? Sure, sir. So, thank you, first of all, for giving me the opportunity for being interviewed by you in the reputed organization. My name is Sohani Bharadwaj. I'm born and brought up in Bulandshahr, Uttar Pradesh. I've done my senior secondary as well as secondary education from Renaissance School, Bulandshahr, which is a CBSE affiliated school in Bulandshahr itself. Then I have moved to Ghaziabad, Uttar Pradesh, along with my family after my schooling. And I have done my graduation from Delhi University, School of Open Learning. And talking about my professional journey in the chartered accountancy career, I have completed my CA foundation in November 2018 by scoring three exemptions out of the total subjects. And I have done my intermediate post COVID. I have completed my intermediate examination, Group 1 in November 21 and Group 2 in December 22 attempt by scoring five exemptions out of total eight subjects. And recently, in the current year, in the May 25, I cleared my CA final Group 1 in the very first attempt, as well as subsequently in the September 25 attempt, I have cleared my Group 2 CA final and completed my CA journey like this. And talking about the articleship journey, I've done my articleship journey from Esloya and Associates, which is situated in the Delhi Connaught Place, and it has also its another branch in Vaishali, Ghaziabad. And talking about my exposure in articleship period, majorly 60% it was into the statutory audits, and remaining domain was into the direct tax, which includes income tax return filing as well as tax audits of various corporate entities as well as non-corporate entities, and a partnership also and individual clients also. And if I talk about the statutory audit domain specifically, I have worked upon various analysis of financial statements as well as which are governed by the indices as well as AS and CARO as well as Schedule 3. And if I talk about drafting of financial statements and drafting of various reports that are required for a company or entity, I've done that too. And besides my academics, I have a keen interest in reading, spirituality, as well as singing. And if I talk about my personal nature, I am kind of a positive person and try to impact the people's life positively. Great. Okay, since you have a major exposure in statutory audit, can you please walk me through the complete audit cycle, right, from planning to the reporting? Okay, sir. So they are majorly the, if I talk about the audit walkthrough. So the very first phase of audit walkthrough is to plan the audit. First of all, planning is the most important phase of audit, and next we go to the execution phase, and then finally come to the reporting phase. Great. So during the audit plan, we go through the business entities. First of all, we analyze the area of the entity, what the entity works in, and what is the business industry that is governed to the entity. And then after analysis of business entity working, we go to the internal control procedures of the entity. What are the internal controls are lying in the entity, whether they are effective or not, and moving towards that, if the internal controls are more effective, then obviously we decide the nature, timing, extent according to that. And if the entity's internal controls are less effective, then we decide the nature, extent, time, and extent of the audit procedures according to that. And finally, we, after the obtaining audit evidence and during the audit procedures, and after obtaining the audit procedures, we come to the conclusions and draft the opinion and draft the audit report on the basis of that. Okay, so majorly you did audit of companies involved in which industries? So majorly, I've audited about the construction sector and textile sector, as well as the automobile sector and other services like healthcare services and broking services, etc. So let's suppose if you will join some firm and there you will get Yes. some industry which is different from all those uh, of what you did audit during your articleship. So how will you Yes. cope up with that? Let's suppose you will get a client of IT industry. So how Yeah. will you convince me that you will be able to audit properly of that industry also?
So first of all, I have a learning capability. So I will try, as during the audit process, first of all, the engagement team, whatever the team is conducting the audit, they always check the competence and capability of the engagement team, that whether they will be competence or capable to conduct the audit well or not. And they also check the knowledge as well as the experience of relevant industry. So if I as a person don't have the knowledge about that industry, I will try to learn about the industry, about the business entity, understanding the nature of the business, and then proceed further for Okay. that. You might have read AS9 during your intermediate, but India's 115 in your finals, right? Yes, What do sir. you think? What is the major difference, and what good things are there in India's 115 as compared to AS9? Okay, so AS9 is the revenue from contracts, as well as the AS in AS 115 is also revenue from contracts. But the major difference I have seen is in AS 5 is much wider than AS9. Hmm. In AS 5 covers the specific performance obligation in a particular transaction, or particular whatever the what I say to that particular whatever the transaction is happening. But in the Ind AS 5, it is the total of sale of goods and services, whether it includes the different performance obligation or not. And the second difference is they determine the uh, revenue is recorded in AS9 on the basis then when goods and services are risk and reward has been transferred to the buyer. But in under in AS 115, the revenue is recognized as and when the performance obligation is being completed. If you suspect inflated revenue in the March end, how will you escalate it? So, okay, so at the March end, if I got to know that the revenue is inflated, first of all, I will ask the management that what is the reason of the year-end inflation in the revenue, and what are the invoice. I will collect the invoices as well as the sales register from the management, that from those that from which party these are inflating, and whether these are real or not, and whether these are reliable or not. And then I will ask the source of the invoices, whether these are from the related parties or not, and if they are from the genuine sources. If they are from the genuine sources, then it will be recorded as per that. And I will also check the accuracy of the assertion of accuracy of the revenue, that whether the accurate amount of the parties have been recorded or not. And is a situation or complex kind of task you came across during your articleship where you have handled or reported something like that? So in the domain of statutory audit. Yeah. So I remember once there was an entity. It was an entity of a construction sector itself. Hmm. So in that, the loan was given to the director uh, by the company, which is not allowed as per the Companies Act of Section number 185. Hmm. So that was the loan given to the director, and the director repaid also that loan. So there was no specifically closing balance showing at the end of the period. So when I was auditing the line items of balance sheet, I just check when we make when we make the schedule of related party transaction in the financial statements. In the note, we disclose na related party transactions. So Hmm. there I have seen the loan received and loan payment. As closing balance was not shown, so there I identified the loan to director, and then I communicated to my principal about the audit findings, and I still remember that the report was modified on that basis. Okay, how will you audit lease accounting? Okay, so lease accounting is governed by Ind AS 116. Lease is the contract on which the right to use of an asset is given to the lessee by the lessor for exchange of some consideration for a time period, whatever the lease term. So for auditing the lease item, we shall go through first of all the what is the inception date, that whether the contract is of lease or not, Hmm. and then we shall do the if that is a inception date, when we shall check the commencement date too, that on which date the accounting has been started or not, whether it has started on the commencement date or either from the inception date itself. And then going forward to the then we shall check whether it is a financial lease or operating lease, as there is a difference between financial lease and operating lease. Financial lease is a kind of a lease that is a purchase agreement, and operating lease is a kind of a lease that is a kind of a rental agreement. Okay. So we shall check it, and we shall analyze whether it is a lease properly accounted or not in the books of the client. And we shall also check the
whatever the rentals are being paid through the bank statement, and whatever the lease agreement says, and whether there is a security deposit in exchange in the rent agreement, whether that security is shown in the balance sheet or not, and if it is the rent agreement that has been concluded, then the security has been refundable by the client or not. And further checking will be of lease liability, ROU asset has been booked or not, and what is the ROU, whether the ROU is depreciated through SLM basis or not. And lease liability also, if there are any direct costs included in the lease liability, we shall also add it to the ROU asset. And if there are lease incentive, we shall deduct that too from the ROU asset. Okay. And there are further things also. If you want me to explain further, I No, can. no. A few basic questions now. Let's suppose you went to an audit of an large entity where after Okay. few of the discussion with the management you realize that internal control is not very much sound. What would be your Yes, sir. approach from sampling point of view? Okay, so if I'm going with the audit procedure of sampling, and if I'm analyzing the internal control of the whether they are effective or not. So first of all, the conclusion that is going to be happen is, maybe it can be the erroneous conclusions from the point of auditor. Like if the controls are not effective, as if the auditor thinks that controls are not effective, but in fact they are effective in the organization, that it may lead to the inappropriate opinion by the auditor. And it will also it will also That is increase audit the risk, I think. uh, You are answering, you are telling about audit risk. I asked you that if you came to know that internal control is not much sound, what would be your approach towards sampling? okay, so if controls are not effective in the case, then I will go to the I will change the I can go to the stratification also. I can also use the stratification technique. Okay. I can go for the stratification technique. Okay, what do you understand by external confirmation? External confirmation is a direct written response from the third party directly to the auditor. Okay, which assay? Uh, Which assay governs this? SA 505. Okay, how will you audit opening balances? Okay, so as per as standards of auditing, initial opening balances are audited. Like initial opening balances are audited in two cases: when the audit has been done by another auditor, previous year audit has been done by any predecessor auditor, or Mm-hmm. the audit has been done in the case of when it was not audited in the previous year. Two are the cases. And if you want to audit about the opening balances, we shall check from the previous year balance sheet the balances of opening balances. And secondly, what are the accounting policies applied into the opening balances of current year. We shall check whether those accounting policies are consistent with the in the opening balances in the current year, and if they are not, whether they are presented, disclosed, and adjusted in the current year balances also. What do you understand by financial reporting framework? Financial reporting framework is the framework that is designed to presentation on disclosure of the financial statements of the entity. Is it static or it can change also based on entity? So it can change also on the For base of example, entity. example. For example, like for banking regulations, for banking companies, we go to the division. We go to the like NDS is not applicable on the banking companies, so we prepare the balance sheet according to their regulations, as well as for the normal entities, we prepare the financial statements as per the NDS. Do you NDS think as well as financial reporting framework and accounting standards are same or what? no, sir, they are different. Why? So, accounting standards are the basic Indian principles as per the national standards. And if I talk about the NDSs, they are basically converged from the IFRS, and they are made on the global standard basis. For an auditor, if I tell you to rank that what is primarily more important, primary and secondary, out of standard Yes, of sir. auditing and accounting standard, how will you rank both of these Out of standard auditing and accounting standards? Index. sir, I think standards on auditing. Why? So, because for the auditing is the way auditing plays a way no ranking. If I do, sir, I'm confused in the question. Can you I please was telling, repeat it? yeah, yeah. I'm just telling you if I'm, let's suppose you are an auditor, okay?
And Yes, sir. I'm asking to you that which skill is more important for you, or which knowledge is of primarily more important to you? Standard of auditing, your knowledge of standard of auditing, or your knowledge of India's, which is more important for you as an auditor? So, if I talk about as an auditor, primarily I should have more knowledge on standards or auditing, but it does not mean that I should not have any knowledge of NDS. So, I think both are equally important, but it may we can give the percentage to 60-40. We can put the ratio into 60-40, like 60% of standards on auditing and 40 on NDSs. As we can discuss with the financial domain about the NDSs, but as an auditor, we have to cover the standards on auditing for auditing purpose. Well, I understand that you have major exposure of statutory audit during your articleship. Why you are not trying for tax or some other profiles like M&A, transfer pricing, and all? So actually, first of all, I before even my articleship, my preferred domain was statutory audit because I had a keen interest in that, and direct tax But was before articleship, like how you had interest in statutory audit? Sir, actually, that was the subject only. During my commerce, when I opted in 11th or 12th, I've Mm-hmm. studied business studies, economics, accounts, and those were the subjects same in the foundation as well as intermediate level. But the new subject I've got to know is audit. And I've always listened the word that audit is conducted, audit is being performed, that audit, this audit. But the difference was that I want to study that what is audit, actually what is done in audit. Mm-hmm. And during the initial period I was studying audit, there were theoretical chapters like these, like essays and all. But then I came across to the chapter of audit of line item of financial statement, and that there I seemed there was a practical insight of the real life exposure. And when I came into the articleship domain of my statutory audit, then I got to know what is the practical exposure, as I was able to incline between the both. Like, okay, what is written in that? And during the drafting of audit reports, as well as during reading of audit reports, whatever the procedure given in essay, whatever the procedure given in the as per the 700 series of audit report, I was able to do that accordingly. Like the format of audit report, it was same as we used to draft in our office. So yeah, there was a more practical insight I have got into the audit. Direct text was also a good profile, but moreover I was interested in statutory audit. Okay. You might be also aware that while working for a big four firms, there are deadlines, there are commitments, client-based role. How will you handle the pressure, or even are you even aware of that? Yes, sir. I'm very well aware with the work pressure of Big Fours. But as I said, I came from the career of chartered accountancy, which itself is a pressure during my studies as well as Mm-hmm. articleship. I used to study for long hours. I've completed my deadlines with my during my articleship. I've also studied together, which was the very hectic schedule for me. But I managed that too. That's how I was able to clear my CA final group one in very first attempt during my articleship. Even I have completed my before even completing my articleship, I have cleared my CA final group 1 and group 2 in subsequent attempt after 3 months of my articleship. So yeah, and talking about deadlines, I have completed during my articleship also. I've came across various deadlines of ITRs as well as tax audit as well as statutory audits and ROC compliances also. Somewhere I've done ROC compliances during my office of articleship. So I've came through many deadlines as well as work pressure. And the and you are asking about me to handling how I will handle. So during my articleship, I used to prioritize my tasks, like which one to done first, which one to do later. And during my studies also, I also used to follow this technique. So hopefully, I will able to do that in my coming future career opportunities as well. Okay. Let's get back to technicals again. How will you audit capital work in progress? So capital work in progress is the asset that has been shown, that should be shown in the balance sheet line item separately under the property, plant and equipment, as well as it is also shown in the fixed asset schedule in the notes to accounts in the financial statements. It is the asset that is not depreciated, and it is the asset that is shown at cost only. And Why is it not if I talk depreciated? about Any reason behind that? so because it is just in work in progress, No, and what if is it the is a logic work of in progress, depreciation? Why do we charge huh? depreciation? What is the logic behind charging depreciation?
So depreciation is the gradual decrease in the useful life of asset, so that we can nullify the asset that is coming into our balance What is sheet matching due concept? to wear and tear. What is matching concept? So matching concept is the concept that double entry system is followed for the matching concept, that the whatever is shown in the, like for example, we use DTA TTL for that matching concept, that the income tax as well as our uh, accounting figures to be matched accurately. Hmm. Okay. What do you And sir, understand now by right now I'm not able to recall no this problem? No concept problem. accurately. What do you understand by going concern? So, going concern is the assessment that is done by the management. First of all, it is the responsibility of management to assess that whether the continuity of the organization in the coming foreseeable future is exist or not. Whether Key entity is going to continue with its business operations in the coming foreseeable future. key audit matters. So, key audit matters are those matters which are in the professional judgment of an auditor are of most significance, that are to be communicated to the those charged with governance, and which should be the importance, which should be of such importance that to be come into the merit attention of the users of financial statements. Okay. During your CA journey or during your study or articleship, have you ever heard that a business should not use their long-term funds in or short-term funds in some long-term contracts or long-term projects kind of thing during finance in finance? No, sir, I haven't heard this kind of thing till yet. Okay. Um, why is there distinction between assets and non-current assets? What is the requirement? So we have to differentiate between current asset as well as non-current assets, because current assets are the ones which are the economic resources that has to be that has the characteristics of realization within 12 months or the working capital cycle of the entity. But non-current assets are those currents which has a useful life of more than 12 months or the more than working capital cycle. And we have to differentiate it, because current assets are those assets which can be used in our daily business operations, but non-current assets also used into the daily business operation, but they have a long-term use. So we have to differentiate them accordingly into our financial statements. Okay, okay, somewhere fine. Related party disclosures. Related party disclosure. Okay, so as per NDS 24, related party disclosures are very important part of the financial statements, as we have to identify as an auditor. If we are auditing the related parties, we have to identify what are the related parties of the entity, what is the nature of relationship between the entity as well as the related parties, and whether there are any transaction that has been conducted during the year for what we are auditing, Hmm. and what are the transactions between them, and whether those transactions are a side of are at side of fraud or they are a genuine transaction. So we will first of all gain the understanding of the relationships between the parties, and then we further procedure we will discuss this to our engagement team and discuss about the related party relationships and their extent with the organization. Okay. What do you know about EY/GDS? So EYGDS is the firm that has a global network across many countries. And talking about EY, that exists with a tagline of better building a better working environment. So I genuinely want to be the part of the organization, as every person, every CA especially, want to be the part of the organization that provides such values as well as the integrity to its clients, people, and values that has been provided to the to other clients, as well as the people they interacting, as well as the sustainability the company provides. And I also think that it provides the best work culture in the organization to the employees. So that's why I want to join the organization. Okay. Overall, all the big fours competes, work, their work style, their structure are almost same. So tomorrow, if Yes, you'll sir. get offer from some another big four, so will you still be stick to join EY/GDS or what?
So that is a confusing question, but obviously, if I'm getting the offer from the EY GDS, of course, if I am hired by the organization, of course, I'll be stick with the EY GDS. But if I won't be able to crack the interview, suppose, then might be I will try No, no, in let's some other suppose big you are course as selected well. here. Let's suppose you are selected here and you also got offer from another before then. No, sir, then I won't be able to leave the organization as I'm strict. I will be stick to this organization itself. Okay. Since now you have qualified CA, Yes. what are your aim? Not in terms of career or finance, amount, money kind of thing. I'm not asking. I'm asking from personality and mindset point of view. Which kind of person you want to become in next 4 to 5 years? Okay, sir. So if I talk about my personal nature and what person I want to become in next 5 years, during my continuing with my professional journey, I also want to become a social worker. I want to help people. From the very starting age of my during my childhood, I have a dream to help people and to do something good for other people and do something mm for animals as well. So I want to do something like that. My aim is to do some social work in future. Okay. How does this becoming CA will change your life? So first of all, through monetary benefits, I will get the monetary good high paying career job it is. So obviously I'll be getting that. And with that help only, I'm not kind of a person that want to just grow myself monetary. If anybody else want to, if anybody genuinely needs help or anybody genuinely wants something that if we can have, they can also have. So I want to do something for those people also, like old age homes and like mm, some other people that don't have their parents as well. So I'll try to help those people and Okay. make education opportunities for them and to serve people food and shelter. If I could be able to do that, I will for sure. Okay. How you keep yourself updated? As a CA, it's very important for us to keep ourselves updated. Yes, sir. So I read Economic Times, and I regularly, if I not say, if I genuinely regularly not, but sometimes I visit TechSguru as well as CA 2013 Companies Act 2013.com for updation in Companies Act as well as the taxes. Okay. What about your Excel skills? How is it? So they are fine. Text to columns. Yes, sir. What is it? So, when we go to when we select any data and we go to the data tab, we go to the text to column, and that converts the text into the whatever the text we are given in the um, whatever the text is given, we can separate it into the various columns. Okay. Fine. Brief family background. So I have a family of four: my father, my mother, and my younger sister. My father is a businessman, my mother is a housewife, and my younger sister is pursuing BTech from AKTU University and a renowned college in Ghaziabad itself. Okay. Okay. I'm done with all of my questions. You have any question for me? So as a chartered accountant, if I join EYGDS, so what kind of expectation do EYGDS will have from my profile? So every time a fresh mind join EY, we always look for some new perspective, because see, in the system we have 15 years of experience, 20 years of experience, 8 years of experience, 4 years of experience. Okay. Yes, sir. So somewhere in this diversity in the team, the point of view, the Hmm. perspectives differs, and there is a gap. So from Yes, sir. new people who are joining, we expect some fresh perspective, fresh mind, fresh energy, and I used to repeat this to all the candidates: a learning attitude. Yes, In the initial phase of your career, your learning attitude will help you a lot. Maybe yes, sir. your mistakes will get pointed out by the senior. You will do some silly of the mistakes, but you don't have to put your head a lot in the silly mistakes, that how I can do this, I'm a chartered accountant. It's okay. Yes, sir. Mistakes used to happen.
It's just you have qualified one of the toughest exam, but the practical things goes a bit different, that you will Yes. be able to cope up in few of days only. But in the initial days, even if you are making some mistake, carry a learning attitude, just move forward, keep reading, Yes. keep updating yourself, keep adapting the environment. That is most important thing, Yes. because doing articleship is a different thing. The accountability was different. Working as a consultant, as a chartered accountant in Big Four, the platform is entirely different. The responsibility is Yes, entirely sir. different. You by yourself will think in you, inside you, that now I'm a chartered accountant, I have to deliver like that. When you will work in this Yes, kind sir. of environment, so the learning attitude, fresh perspective is all the things that is being required. Okay, sir. Any And other? so one more question is like I've listened that EY GDS and EY India. So many people and many other people have said me that EY GDS has low work pressure than the EY India. So is there any difference between the work pressure or work experience between the two? I know Uh, work experience obviously will be different, but I'm asking about the work See, pressure. what happens is, the basic difference between EY India and EY GDS is, EY India is have Indian clients. EY GDS will Okay. mostly have a foreign clients. Okay. Yes, sir. So I would not say that there is very much difference in work pressure. However, like you said, that experience would be almost same. It's just like we would be interacting with more with the foreign clients. We will working more with the US gap. Like if you will work in EY India, you may get few of the clients where this India is only applicable, US gap is not applicable. Okay. Okay, But okay. here in GDS, you will work on IFRS, US gap in most of your cases. So experience is same. uh, from point of view of this work pressure, I can say there is a bit difference. Yes, there are a bit load are on the lesser side here, but Okay. we have a lot of programs. We have a lot of things where you can get involved yourself if you feel that you are going to get a less pressure in EYGDS. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Okay, Swani, it was great talking to you. I'll pass your feedback to HR and they'll get back to you. Okay. Thank you, sir. Thank you so much. Bye. Wait 1 second. Okay, sir. Hmm. Hi, Suhani. Good evening. Hi, sir. कैसा Good रहा evening. इंटरव्यू? So it was fine. इट वाज फाइन. मुझे उस टाइम ना अपना फेस एक्सप्रेशन भी चेंज करना पड़ता है. Yes. चलो मैं ना आपको बताता हूँ चीज़ें पहले, फिर अदरवाइज मैं भूल जाऊंगा. मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं. ओके. अच्छा, तो Okay. पहली बात, आप अपना कैमरा एंगल ठीक करो. आप अच्छा लैपटॉप से ज्वाइन किए, फ़ोन से ज्वाइन किए, ये बताइए. Laptop. थोड़ा सा दूर कीजिए लैपटॉप. थोड़ा सा बस. वो हेड का एरिया काटिए, डाउन कीजिए. स्क्रीन स्क्रीन डाउन कीजिए. हाँ, बस 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 बस. थोड़ा सा ऊपर कीजिए. बस बस. Okay. सी, फर्स्ट बटन के हाफ दिखना चाहिए, ठीक है. सेकंड बटन तक नहीं. ठीक है, यहाँ तक ठीक है. ठीक है, अभी ठीक Okay. है. ठीक है, अभी ठीक है. तो उससे क्या होता है ना कि आपका पूरा अपीयरेंस दिखता है. आप काफ़ी क्लोज दिख रहे थे. ठीक है. Okay. प्लस जनरली तो मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट इधर उधर देखते हैं, बट आप इतना डाउन क्यों देख रहे थे? इतना नीचे So you have said in your videos that you do not have to think like and you हाँ have to हाँ. just वो सी think डाउन तो down. ठीक है, बट पहली बार मुझे मतलब डाउन ठीक है, बट आप डाउन इस तरह से देख रहे थे कि यू आर चेकिंग समथिंग. एंड ऐसा इसलिए लग रहा था बिकॉज आप काफ़ी पास थे. दो चीज से अब Okay. इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था. देखो, अभी आप इतना दूर रहकर डाउन देखते हैं ना, तो इससे क्या इंप्रेशन बनता है बताओ, कि कैमरा पक्का दूर है, मतलब लैपटॉप पक्का दूर है, तो यहाँ क्या देखेगी? नीचे देखेगी, राइट. बट अगर लैपटॉप पास है, यहाँ पे है, और फिर यहाँ पे देख रही है, दैट मीन्स यहाँ पर कुछ रखा हुआ है. रखा है. इसीलिए ये ऑड लग रहा था. आप अगर ऐसे डाउन देखते हैं ना, तो फर्क नहीं पड़ता. ठीक है ना. तो कैमरा Okay. एंगल का बात है. ठीक है. Okay. सेकंड थिंग, हेयर थोड़ा सा और आप प्रॉपर टाई कीजिएगा. ठीक है. थोड़ा सा यहाँ Okay. पर साइड निकला हुआ है ऐसे करके, मतलब मे बी आप अभी ऐसे है, बट थोड़ा सा इसको प्रॉपर कर लेना. Okay. बाकी सब कुछ ठीक है, बैकग्राउंड ठीक है, ये सब ठीक है. हाँ, इसके बाद देखो, कुछ क्वेश्चन तो अपना रूल बना लो, दैट इंट्रोडक्शन जो है ना, इंट्रोडक्शन बिहेवियरल क्वेश्चन, वाई सी ए, वाई ई, वाई जी डी एस, वाई स्टैट्यूटरी, इसका फिक्स आंसर रखेंगे. चाहे वो इंट्रोडक्शन में कितना भी बोल दे कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, योर आर्टिकल शेप, योर दिस, योर दैट, अपना जो याद रखे ना इंट्रोडक्शन, स्टार्ट उसी से करेंगे. एंड जो एक्स्ट्रा उन्होंने बोला ना, लेट सपोज बोल दिया उन्होंने आर्टिकल शेप, एंड आपके प्लान में मतलब इंट्रोडक्शन में ज़्यादा आर्टिकल शेप अगर नहीं है, तो बोलना अपना वाला ही है. बीच में आर्टिकल शेप के बारे में 2 से 3 लाइन बोलना है.
मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, ओके। एक तो बात समझना इंपॉर्टेंट, इंटरव्यू का ना थोड़ा सा समझो कि ये क्या सेशन है। हड़बड़ में रहते हैं बिग फोर्स वाले, ठीक है, ये मैं हर कैंडिडेट को बोलता हूँ, बिग फोर्स वाले काफ़ी हड़बड़ में रहते हैं। वो 30 मिनट्स लेकर आएंगे और आपका इंटरव्यू लेंगे, जल्दी जल्दी ओके। सुनना चाहते हैं, ठीक है। मैं ओके। जनरली हर स्टूडेंट को थोड़ा सा, मैंने ना इंटरव्यू को काफ़ी मोल्ड किया आपके साथ, बिकॉज मुझे थोड़ा सा असेसमेंट करने में ना कभी ये पॉइंट सही लग रहा था तो कभी ये पॉइंट सही लग रहा था, इसलिए मैंने 2 3 4 तरीके से चेक किया। तभी आप देख रहे होंगे कि कभी मैंने आपसे सिर्फ वो वाला रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, मैंने और कुछ नहीं पूछा। डेफिनेशन बताना है, ऑडिट बताना है, क्या बताना है और उस सब वो सब चीज़ के रीज़न थे। मैंने बीच में आपको 1 2 बार रोका भी, ठीक है, उन सब चीज़ का रीज़न था, मैं आपको बताता हूँ। तो इंटरव्यू में एक सिंपल सी बात है कि वन प्रोफेशनल विल कम एंड यू हैव टू आंसर। एक चीज़ अपने माइंड में डालो, इंपॉर्टेंट है, मैं आपको घमंड करने नहीं बता रहा हूँ, बट आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ठीक है। ये इंटरव्यू ओके। इंटर्न का नहीं है, ये इंटरव्यू फ्रेशर का नहीं है, ये इंटरव्यू समर इंटर्न का नहीं है, मैं तो आई हूँ इंटरव्यू देने, ऐसा मोड लेकर मत आना। ये एटीट्यूड आप में था भी नहीं, ठीक है। मैं आपको ये जनरल ओके। बात बता रहा हूँ। ऐसा इसलिए बता ओके। रहा हूँ कि मे बी कोई इंटरव्यूअर हो सकते हैं ऐसा कि थोड़ा सा उनका टाइट बिहेवियर रहे, बल्कि मैं आपको बताता हूँ कि जैसा मैंने इंटरव्यू लिया इससे सॉफ्ट इंटरव्यू होगा, बट मे बी कोई इंटरव्यूअर अगर ऐसा आ जाए, ठीक है, जिनको बीच में ज़्यादा टोकने की आदत हो, जो जो मे बी 1 2 लाइन आपको बोल दे ऐसा जिससे आपका मोरल डाउन हो, बट अपना मोरल को किसी भी ओके। एंगल से मोरल को आपको डाउन नहीं करना है, क्योंकि आप सीए है, आप सीए बन के इंटरव्यू देने आ रहे, बात याद रखना, 12th क्लास में नहीं हो आप, ठीक है, 12th नहीं हो आप, ग्रेजुएट नहीं हो आप कोई नॉर्मल मास्टर डिग्री नहीं हो, ठीक है। तो यू हैव टू कैरी ओके। कॉन्फिडेंस, जो कि बिल्कुल दिख रहा था आपकी बात में, ठीक है। ओके। अब देखो, मैंने इंट्रो में लिखा है कि भटकना नहीं है ज़्यादा, कहने का मेरा मतलब यही था कि इंट्रो वाइज ये जितने भी बिहेवियरल क्वेश्चन रहते हैं इसका फिक्स रखो आंसर, ये बिल्कुल स्टार्ट होना चाहिए और एंड होना चाहिए। इसमें कभी भी मुझे ऐसा फील ना हो, इंटरव्यूअर को ऐसा फील ना हो कि आप सोच रहे हैं, आप फिगर आउट कर रहे हैं, क्या बोलूँ, ये भी बोल दूँ क्या, वो भी बोल दूँ क्या, नहीं। 99% ऑफ द केस में पहला क्वेश्चन रहेगा, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ निकलना चाहिए। उनको टेल मी अबाउट हाँ, योर। उनको और कुछ पूछना होगा तो पूछेंगे ना, एंड व्हाट अबाउट योर आर्टिकल से पूछने दो ना, अच्छा बात है ना, समय निकलेगा। आपने मेरा मॉक्स कोई देखा होगा, वहां पर मैंने ये बात बोला, मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ। 30 मिनट्स वो लेकर आते हैं मान लो कि वो 20 क्वेश्चन लेकर आए, ठीक है, 10 क्वेश्चन लेकर आए, सॉरी, 30 मिनट्स में वो मान लो 10 क्वेश्चन लेकर आए। आप उनको प्रॉपर, हम लोग को टाइम देना है उनको पूछने का। लेट सपोज मैंने आंसर को बहुत लंबा लंबा बोला, इतना लंबा बोला कि 20 मिनट्स में वो 4 क्वेश्चन ही पूछ पाए, तो उनको लग गया ओके। कि अब तो मैं पूछ नहीं पाऊंगा, तो समवेयर आई एम नॉट एबल टू असेस दिस कैंडिडेट प्रॉपरली, ठीक है। बट अगर आप अपना स्ट्रक्चर्ड आंसर करो, जल्दी आंसर को आप एंड करो, एंड मैं आपको बताता हूँ, दिस इज नॉट अ रिटन एग्जाम, ये 8 6 12 20 मार्क्स का नहीं है, यहाँ पर आपको 3 to 4 to 5 लाइन का आंसर करना है, बस उससे ज़्यादा नहीं करना है प्लीज़। और कुछ भी वो पूछे ना, उसका पहले सबसे सिंपल आप आंसर करो। देखो चलो ये बात मैं बाद में करूंगा कवर, ठीक है। कुछ भी वो पूछे, सबसे पहले सिंपल बेसिक डेफिनेशन से ही स्टार्ट करो, बेसिक डेफिनेशन से। हल्का सा अगर आपको एडवांस पता है, आपको मान लीजिए इतना एडवांस पता है, मत बोलो इतना, इतना ही बोल के चुप हो जाओ। क्या पता वो बाकी ना आपसे पूछ लेंगे, अगर पूछ लेंगे तो बताओ, एक क्वेश्चन बढ़ गया ना, राइट। और ये उनका ही था क्वेश्चन, इसीलिए यू डोंट हैव टू कंप्लीट द आंसर बहुत ज्यादा, ठीक है, 4 to 5 ओके। लाइन करके एंड कर देना है। मैं सारे स्टूडेंट को बोलता हूँ कि ज़्यादा बुकिश टाइप से स्टार्ट मत करो, इस तरह से स्टार्ट करो कि लगे कि आप बात कर रहे हो। वो बात आप में पूरा था, बट उसमें मुझे आज फर्स्ट टाइम किसी कैंडिडेट के साथ एक ये प्रॉब्लम लगा कि आप बोल तो बहुत फ्लुएंट रहे ना, इंग्लिश में आपके प्रॉब्लम है ना, टोन में प्रॉब्लम है, बट प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग आंसर का नहीं रहने के कारण ना खो जा रहे थे कि क्या बोल रहे थे आप, मतलब लिंक नहीं हो पा रहा था। ओके। तो आप जो नॉर्मली बोलते हो ना, ये बहुत अच्छी बात है कि आप इस तरह से बात करते हो कि आप बुक का बात आप कर ही नहीं रहे हो, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, आपकी अंडरस्टैंडिंग करता है शो। जैसे इफ आई आस्क यू अबाउट योर फ्रेंड, कल शाम में क्या हुआ था, कल आप लोग पार्टी में गए थे फैमिली के साथ, क्या हुआ था, जब आप आंसर करोगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि आप बुक से तैयारी करके आए हो। बट कोई कैंडिडेट अगर ऑडिट एविडेंस या ऑडिट रिपोर्ट की बात करता है तो ऐसा फील आता है कि बहुत स्टैंडर्ड अच्छे तरीके से बोल रहा है, पढ़ के आया है, बोल रहा है, ठीक है। तो वो चीज यहाँ इंटरव्यू में रहने की जरूरत नहीं है, इंटरव्यू में अंडरस्टैंडिंग दिखना चाहिए, जो कि आप में दिख रहा है। इट्स जस्ट आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर करो आंसर को, स्ट्रक्चर इन द सेंस 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, खत्म, पता चलना चाहिए। सो वो ना कुछ आंसर्स में समझ नहीं आ रहा था मेरे को मैं क्या बोलूँ, तो फिर मैंने हम्म, इसलिए जो भी मुझे बस पता था वो बस मैंने बोल बस दिया। आपने बिल्कुल सही बोला। मैं आपको पता है मुझे बीच में क्या डाउट हो रहा था, अभी ऑफिस में बहुत काम हुआ है, ठीक है, तो मुझे क्या डाउट हो रहा था कि कहीं मेरा ही ध्यान नहीं है क्या, जो मुझे आंसर नहीं समझ आ रहा है,
ठीक है। तो ओके। मैं काफ़ी फोकस करना चाह रहा था, बट आप सच में बीच में कहीं पे आंसर को मोल्ड कर रहे थे या एक्सटेंड कर रहे थे, वो करने का ना कोई पॉइंट नहीं है। देखो जितना देर में सवाल पूछे ना, थोड़ा सा फास्ट तो माइंड को वर्क कराना पड़ेगा, उतनी देर में ही आपको ना, सबसे पहले बात, जैसे मैंने आपसे रिलेटेड पार्टी बोला ना, डिस्क्लोजर मैंने यहाँ पे मार्क भी किया है। मैंने सिर्फ रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर बोला, एकदम सिंपल से स्टार्ट करो। ठीक है, रिलेटेड पार्टीज क्या होते हैं, ठीक है, ए एस 18 में है ना, इंडेस जो भी हो, ठीक है, बिल्कुल। और वो भी बेसिक वाला, एज पर इंडेस, ये वो ऐसे नहीं। रिलेटेड पार्टी इज बीइंग डिफाइंड इन ए एस 18। it basically required disclosure of related parties of a company in their financial statement ऐसे। related parties disclosures are required by the law because there are high chances that fraud can be conducted in collusion with the related party। बोलो मैंने कोई भी एएस का लैंग्वेज यूज किया क्या? बट मेरा तीन लाइन भी निकल गया, और मैंने एक बेसिक, क्या इस आंसर को कोई गलत बोल सकता है? जरा मुझे बताना। दिस इज नॉट रॉन्ग, राइट? अब इसके बाद अगर आपको But बोलना so है, in, हाँ सुनो सुनो, excuse, sorry. एक मिनट। Okay. इसके बाद अगर आपको कुछ बोलना है ना, तो बोल दो कि एज पर एएस 18 रिलेटेड पार्टी का जो डिस्क्लोजर है ऐसे ऐसे, एंड वाइल ऑडिटिंग वी शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ, और 2 पॉइंट बोल दो। बस इतना करके आंसर खत्म हो गया। नहीं तो जब वो सिचुएशन आ जाता है ना कि ये इतना बोल रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, या क्या बोली थी, तो क्या होता है ना कि आपका बड़ा आंसर वैलिड भी रहता है ना, तो पहला वाला पार्ट तो भूल गए ना, तो फिर हाफ का Hmm. भी समझ नहीं आता है। एंड एक बात इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ, अभी आप बिग फोर ज्वाइन करोगे तो आपको रियलाइज होगा दैट बिग फोर वाले सुनना नहीं चाहते। बड़े बड़े असाइनमेंट लेकर मैं जैसे मान लो अपने डायरेक्टर के पास जा रहा हूँ, तो मुझे पहले प्लान करके जाना पड़ता है कि मैं क्या शॉर्ट में बोलूंगा। वो नहीं सुनेंगे इतना, इसने डेटा भेजा था, उसने डेटा भेजा था, फिर ना मैंने इसे ऐसे कर लिया, फिर ना वो ऐसे, तो ऐसे हुआ तो मैंने इसको ऐसे किया, फिर जाके ये ऐसे हुआ, नहीं सुनेंगे। Hmm. तो जब एक काम को लेकर नहीं सुन रहे, तो इंटरव्यू में भी दे एक्सपेक्ट स्ट्रक्चर्ड आंसर। ठीक है, Okay. तो ओवरऑल मैंने आपको अभी तक यही बोला है कि एक तो कैमरा, दूसरा दूर करके डाउन देखना कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड थिंग, आंसर को स्ट्रक्चर करो, बस। बाकी आप सही बोलते हैं। ठीक है, आप कुछ बोल रहे थे। सर वही रिलेटेड पार्टी वाले क्वेश्चन में मैं बोल रही थी कि जो मैंने तीनों चीज़ें बताई थी, दैट मतलब जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी डालते हैं अपना, कि व्हाट आर द रिलेटेड, हु आर द रिलेटेड पार्टीज, व्हाट इज द नेचर ऑफ रिलेशनशिप्स, एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। सो मैंने उसी बेसिस पे आंसर दिया था बस। हाँ, तो वो ना बिल्कुल ऐसा दिखना चाहिए कि आप पहले बता रहे कि इसमें ये, फिर आप बता रहे टाइप ऑफ दिस, फिर आप बता रहे टाइप ऑफ दैट। जैसे मैंने जो आपको बोला, पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे हैं। सी, आई एम नॉट टेलिंग कि आपका वाला बात रॉन्ग है, आप बात को समझिए। आप ओके ओके। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे हैं। मेरा वो वाला पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपका माइंड काम रहेगा इंटरव्यू में, आप आंसर भी कर लोगे, सामने वाला आपको गलत भी नहीं बोल पाए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लॉ में जाओ मत, वहां तो जाना है, बट ओके। स्टार्ट हमेशा सिंपल से करो ना, आपको हल्का फील होगा। अच्छा, आंसर करते समय ऐसा नहीं फील होता है कि एवरी आंसर फील्स लाइक हम पहाड़ पे कार चढ़ा रहे हैं फुल स्पीड, मतलब जितना देर होते जाता है उतना अंदर से प्रेशर प्रेशर प्रेशर, मैं कैसे रुको रुको रुको, हाँ थैंक गॉड, मेरे तो कान हाँ वगैरह सब यहाँ गर्म थे जाके रुका। पूरे तो interview के टाइम। ये तभी होता नर्वसनेस है। की वजह से हाँ पूरा फेस हाँ ऐसा फील हाँ हो रहा था, फीवर चढ़ रहा है, हाँ, तो ये क्योंकि मेरा तभी होता है जब आप नाक। स्टार्ट ही करते हैं बहुत ज्यादा। एक तो पहला बात, इसको बिल्कुल वैसे लीजिए, आज आपके अंकल कुछ पूछेंगे, कोई सीनियर कुछ पूछेंगे, कोई भैया कुछ पूछेंगे, तो बता दोगे ना अगर आता होगा तो वैसे someone is asking and you have to answer। इंटरव्यू यही है। इंटरव्यू, मैं इस पे सच में सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ कि मतलब व्हाई आर यू फीलिंग दैट इंट्रोगेशन आपका होने वाला है। सच में ऐसे, मतलब मुझे तो इतने सारे मैसेजेस आते हैं कि सर कैसे होगा, अब डायरेक्टर राउंड है तो क्या करूं, पहले मैनेजर क्लियर हो गया, अब डायरेक्टर है तो मैं उससे क्या बेटर करूं। कुछ नहीं करना होता है बेटर, एक लेवल ऊपर ही होता है, तो कुछ नहीं करना होता है बेटर। मैं कहता हूं सिर्फ प्रैक्टिस करो कि हाउ विल यू स्पीक इन मोर काम वे। ठीक है, आप फेस पे स्माइल वगैरह हल्का रख रहे थे, दैट इज फाइन। देखो कॉन्फिडेंट आदमी ही स्माइल करता है, डरा हुआ आदमी स्माइल नहीं करता है। ठीक है, तो हल्का स्माइल करना, फेस हेड मूवमेंट वगैरह ये सब बिल्कुल ठीक था। तो आपको टेक्निकल भी आपका सही है, एक दो जगह आप कर रहे थे जैसे देखो यही होता है, हम लोग ज्यादा जब बुक से कनेक्ट होते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ आपने ओपनिंग बैलेंस का ऑडिट में जो गलती किया, क्यों किया। ओपनिंग बैलेंस का ऑडिट आपने कहा कि हम दो केसेस में करते हैं। एक तो जब पहला वाला ऑडिटर, ये ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसे 510 स्टार्ट ही होता है ना, तो इस तरह से ही स्टार्ट होता है ना, कि एक Yes, केस जब पिछला ऑडिटेड है, एक केस जब पिछला नहीं ऑडिटेड है। ऐसा नहीं है, ओपनिंग बैलेंस हर केस में ऑडिट होगा। आप बताओ कोई एक ऐसा ऑडिट है
जी Yeah, that was a essay governed was initial audit engagement, हाँ not हाँ opening audit engagement. नहीं नहीं ठीक है, वो इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में ही ओपनिंग बैलेंस का ऑडिट है, बट Yes. स्टार्ट इस तरह से हुआ है कि वो ये नहीं है कि दो केस में ओपनिंग बैलेंस का ऑडिट होगा। वो जो बात बोला गया है ना, वो ये बोला गया है कि अगर पिछला ऑडिटेड है तो कैसे ऑडिट करना है, और पिछला ऑडिटेड नहीं है तो कैसे ऑडिट करना है। ओपनिंग बैलेंस तो ऑडिट हर हाँ केस में होगा। आपने बोला कि ओपनिंग बैलेंस इज टू बी ऑडिटेड इन 2 केसेस। इससे क्या पता चलता है कि सिर्फ यही 2 केस वाले ऑडिट में ओपनिंग बैलेंस ऑडिट होगा, बाकी ऑडिट में ओपनिंग बैलेंस ऑडिट ही नहीं होगा। हाँ दैट सर, वरना इसका आंसर ये होना चाहिए था ना कि अगर प्रीवियस ऑडिटर ने रिपोर्ट अनमॉडिफाइड दी है तो इट विल बी फाइन है, अगर मॉडिफाइड दी है तो फिर हम उसके इफेक्ट्स को चेक करेंगे वो ओपनिंग बैलेंसेस में एडजस्ट ठीक है, हुए हैं या नहीं बट फिर हुए। आप बहुत आगे जा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, ओपनिंग बैलेंस का ऑडिट ही करना है ना, ओपनिंग बैलेंस का ऑडिट का आप प्रोसीजर चेक कर लीजिए। और ये गलत नहीं है, पहला बात से मैंने क्या बोला, आप बस आगे जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस के ओके। ऑडिट में सबसे पहला तो हम लोग फाइनल्स में याद भी ऐसे किए थे कि पिछले के क्लोजिंग से अभी ओपनिंग का ओपनिंग को मैच कर लो, ये हो गया पहला ऑडिट प्रोसीजर। उसके बाद ये देखना हम्म। होता है कि पिछला का क्लोजिंग में कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट रह गया था क्या, जो इधर ट्रांसफर ना हो गया हो, ओके। ठीक है। तो यही आपको 2 से 3 ऑडिट प्रोसीजर, और इसमें एंड एक सर और चीज है। अकाउंटिंग पॉलिसीज वाला पॉइंट था ना जो कौन सा? ओपनिंग बैलेंसेस में अप्लाई हुई है, अकाउंटिंग पॉलिसीज वो ही हाँ 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 कंसिस्टेंट रहनी चाहिए हाँ हाँ प्रीवियस हाँ ईयर से। हाँ। मैंने तो 2 ही पॉइंट्स बोले थे हाँ, वो वाले। तो वही ना, एक तो ऑडिटिंग प्रोसीजर जब भी पूछे ना तो बुलेट लाइंस में बोलो, आई विल वेरीफाई दिस देन आई विल चेक दिस। और आप पूरे अपने कॉन्वर्सेशन में एंड बहुत यूज करते हैं। एंड एक ऐसा वर्ड है जिसको हमेशा लास्ट के 2 कनेक्टिंग वर्ड में या सेंटेंस में यूज करना है। एंड को आप हर अगर आप 4 सेंटेंस बोल रहे हैं तो सबसे थर्ड एंड फोर्थ के बीच में एंड यूज होगा ना, हर बार एंड चार एंड में वही। तो एंड बोलने की जगह ना चुप हो जाइए, पॉज ले लीजिए। जैसे कुछ लोगों को बोलने का आदत है, यू नो वाइल स्पीकिंग इंग्लिश, उनको आदत होता है यू नो करने का, ठीक है। तो यू नो या करने से बेटर है कि थोड़ा सा आप पॉज ले लो। ये मैंने ईवाई में बिजनेस स्किल्स हो रहा था एंड कम्युनिकेशन, वहां मैंने सुना था, बहुत अच्छी, मतलब वो चीजें बता रहे थे कि वाई द मतलब बेस्ट स्पीकर्स का प्रॉब्लम क्या है। एंड वो सच में इतने बड़े बड़े स्पीकर्स का वीडियो दिखाया, और जब उसमें प्रॉब्लम हाईलाइट किए ना, तो सच में मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ बिकॉज वो लोग बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े फाउंडर्स हैं, फॉरेन के फाउंडर्स है। उसमें वो जेन्युइन मिस्टेक हाईलाइट कर रहे थे। मिस्टेक नहीं कहो कि किसी के आदत होने की वजह से, जैसे मेरी ही कुछ चीजें आदत है जो कि कोई अगर देखे तो कहे यार ये जो बार बार करता है दिस इज नॉट गुड। So overall, if I am speaking a great English, still some of my repetitions or some of my personal आदत वो सब चीज खराब कर देगा, ठीक है। मेरा क्या काम है, आपका क्या काम है कि मैं पूरा प्रिपेयर होकर जाऊं, दैट्स इट। अभी चीजें हाईलाइट हो जा रही है बेटर है, हु नोज कि इंटरव्यूअर कैसा मिले, ठीक है। यस। तो वही चीज है। तो भाई ओवरऑल एक स्ट्रक्चर की बात है। प्लस देखो इंटरनल कंट्रोल, मैंने बोला आप सैम्पलिंग के लिए क्या करोगे, देखो सिंपल आंसर, स्टैटिफिकेशन में हम क्यों जा रहे हैं, जब हम जैसे ही मैंने सुना कि इंटरनल कंट्रोल इज नॉट इफेक्टिव, तो मैं अपना सैंपल साइज बढ़ा लूंगी बस, ओके। सैंपल साइज को तो इंक्रीज ये कर ना मेरे लूंगी। माइंड में आ रहा था बट मैंने हाँ, दूसरा पॉइंट क्योंकि बोल जब दिया, कंट्रोल अच्छा एररनेस नहीं है तो हम ज्यादा कंक्लूजन्स। चेक करेंगे, ठीक यस। है। इसके बाद हाँ, देखो मैंने बोला कि थोड़ा सा आपको स्टोरी टेलिंग, जो आंसर का आपका तरीका है स्टोरी टेलिंग एंड थोड़ा सा टेक्निकल्स में बैलेंस करना पड़ेगा। वैसे मैं वेटेज स्टोरी टेलिंग को ही बोल रहा हूँ ज़्यादा रखने, बट ऐसा भी ज़्यादा अब देखो स्टोरी क्या हमेशा लंबा होता है, कोई स्टोरी आपने सुना छोटा, हाँ, तो इसीलिए स्टोरी टेलिंग वर्ड यहाँ पे सुटेबल नहीं है जब मैं ये कर रहा हूँ कि इंटरव्यू में आंसर को शॉर्ट शॉर्ट रखना। एंड शॉर्ट रखने का मैं क्यों बोल रहा हूँ, स्ट्रक्चर रखने का क्यों बोल रहा है, ये आप रीजन समझे ना। आप उनका ज्यादा वक्त नहीं ले सकते, पता है इस बात पे बस ईगो हर्ट हो जाएगा कि इतना क्यों बोल रही है, भले आप सही बोल रहे हो। अब तो सीए बनने के बाद भी ऐसा लगता है ना, यू आर एम्प्लॉयड टिल येट, तो कोई पूछता है अभी क्या चल रहा है क्या, तो इतना वो रहता है अजीब सा कि अभी कोई क्या नहीं, बोलें किसी को। और इसका भी बात है, आप कहोगे कि हर बात का अगर बात निकाल के सर वो बोल देते, ये सिर्फ आपका केस नहीं है। मैं ऐसा सीन हो गया था ना, मुझे जाना बिग फोर ही था, एक तो मिड साइज फर्म का आर्टिकल हूँ, कोई मेरा कॉन्टैक्ट नहीं था, इवन मैं गाइड करने स्टार्ट ही इसलिए किया हूँ क्योंकि मेरा कोई था नहीं, ठीक है। हम्म। तो एंड मैं सिर्फ मॉक का ही चार्ज करता हूँ, बाकी मैं कुछ आर्टिकल्स ही में जितना बात करे मुझसे स्टूडेंट, मैं उस सबका कुछ नहीं चार्ज करता हूँ, ठीक है। हम्म। तो मेरा ऐसा सिचुएशन हो गया था ना कि मैं रात में देखा ईवाई जीडीएस का ही वैकेंसी है, रात में देखा 2:30 बजे, मैं 2:30 बजे मैं दीदी के क्वार्टर के सामने रहता था, रात में मैं चले गया, तो दीदी उस समय रेंट पे रहती थी,
रात में मैं चले गया हम्म, ढकढका कि मैं जा रहा हूँ जयपुर, ठीक है, रिद्धिमा की हम्म, रात में बोली बैठो, ठीक है बैठो, हाँ ठीक, हो जाएगा। मैं नवंबर 18 में क्वालिफाई किया था, जैन 23 मेरा रिजल्ट आया था, मैं मई में ज्वाइन किया था पीडब्ल्यूसी। और उस बीच का जो पीरियड था मुझे ही पता है कि कितना पेन होता है। बट आज हम्म, लगता है कोई फायदा नहीं है। अब कोई इस बार आया हुआ आदमी आपको बोल रहा है कि कोई फायदा नहीं है, तो सीखो उस चीज से, स्ट्रेस मत लेना। मे भी अच्छा हो नहीं हो, अभी हो 4 दिन कंपनी बाद हो, 4 इंटरव्यू बाद हो, पढ़ते कंटिन्यू रहना। लोग स्ट्रेस में चले जाता है, पढ़ना छोड़ देता है, कॉल आएगा तो अपना हम्म, पढ़ेंगे। आर्टिकल वाले भी ऐसा करते हैं, सीएस भी ऐसा करते हैं, ठीक है। हम्म, वो मत करना, सच में मत करना। कोई नहीं पता, आपका तैयारी नहीं होगा, फोन आ जाएगा कि अभी इंटरव्यू है 2 घंटे में, ठीक है, हम्म, उस समय आप फंस जाओगी। तो कल का हम्म, इंटरव्यू अच्छा होगा, जैसा भी होगा स्ट्रेस मत लेना। बहुत समय अभी भी, आराम से पढ़ो, आराम से प्रैक्टिस करो, सब चीज़ सॉर्टेड है। इट्स जस्ट आपको कि चीज़ों को स्ट्रक्चर करके बोलना है। आंसर करते समय हमेशा ध्यान रखना, मैं ज़्यादा तो नहीं रिलीज कर रही हूँ, रोक देते हैं यहीं पे, ठीक है। अगर ओके, बेसिक हो गया, बेसिक डेफिनेशन, टाइप्स, मेथड्स खत्म। बेसिक डेफिनेशन, एडवांटेज डिसएडवांटेज वो भी हल्का हल्का खत्म। कोई बैठ के कॉपी थोड़ी चेक कर रहा है कि अरे स्टडी मेट में तो 4 पॉइंट एडवांटेज का, ये तो 2 ही बोली, काटो इसका 2 नंबर, है हम्म, ना। ये सब बात ध्यान रखना, और आप बहुत अच्छा प्रेजेंट करोगे कल। मैं आपको सही बता रहा हूँ। और ये कोई मोटिवेशन नहीं है, मैं बहुत कम तारीफ करता हूँ, सब मेरे स्टूडेंट यही बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो अगर मैं बोल रहा हूँ ना कुछ चीज़ें सही है, तो वो सच में सही है। जो कैरी करके ले जाओ, मैंने बोला है थोड़ा सा पढ़ लो चीज़ों को अच्छे से, ठीक है। और बहुत ही रैशनली आंसर करना, बहुत ही रैशनली आंसर करना। इंटरव्यू के बीच में बिल्कुल मत सोचना ये सब मुंह क्यों बना रहे हैं, मैं तो एगो का आंसर नहीं कर पाई। होता है ना, बैक ऑफ द माइंड में इंटरव्यू में ही चलने लगता है, कहीं मैं नर्वस दिख रही हूँ क्या, मैं कुछ ऐसा हो हम्म, रहा है क्या, मैं तो थोड़ा सा, मैं तो फंबल कर गई, वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, ऐसा कुछ नहीं। हम्म, चलो अब जाओ, अब बस आपका काम है पढ़ना एंड प्रैक्टिस करना। कल 12 बजे तक भी इंटरव्यू पहले तो कुछ डाउट आउट हो गए सच, तो मुझे मैसेज कर लेना, ना हो तो मुझे कॉल कर लेना, बट पूछ लेना, ठीक है। तो अभी मैं ये बोल रही थी कि मैं ऑफ कैंपस अप्लाई करूँ तो उसकी क्या अप्रोच रहनी चाहिए? करो, बस अप्लाई करो, फिर इंटरव्यू के लिए आने दो कॉल। अप्रोच क्या, तो लिंक्डइन पे शॉर्ट लिखना लिस्ट नहीं हो है। पाता ना, मतलब शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाती ना अपना सीवी। रिज्यूमे आपने मुझे भेजा है ना, देखेंगे उसमें कुछ करेक्शन हो गया सच, ठीक है। तो जहाँ भी वैकेंसी दिखे उसको एक अच्छा सा मेल भेजो, और क्या, यही करना है बस। हम्म, हाँ, तो अप्लाई करते रहो चीज़ों, कैंपस का वेट मत करो, ठीक है। और ओके, अभी अभी सच में, अभी इवन दो आपका कुछ सवाल भी है ना, अभी मत पूछो। अब आपका ध्यान सीधा कल का 12 बजे रहना चाहिए, ठीक है। ओके, कौन ओके, जानता है, कल ही श्योर, आपका हो गया, बात खत्म है, अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ईवाई जीडीएस, ठीक है। तो अगर ओके, हो जाए ओके, तो बेटर है, ठीक ओके, है। थैंक यू सर, थैंक यू चलो सो चलो, मच, पढ़ो अच्छे से, थैंक यू फॉर प्रैक्टिस योर करना टाइम, थोड़ा, ठीक है, ठीक है, बाय। ओके, बाय।